बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़र्रुख अब्बास हाजिर है। पिछला प्रोग्राम जो हम लोगों ने स्टूडेंट वीज़े पे किया था उसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया और कई मज़ीद सवालात आए जो लोग चाह रहे हैं मालूम करना। तो इस सिलसिले में आज का प्रोग्राम हम स्टूडेंट वीज़े के हवाले से ही कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारे साथ ज़ीशान रज़ा शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम सलाम। पिछला प्रोग्राम जो हमने किया स्टूडेंट वीज़े के हवाले से तो बड़ा अच्छा उसका फ़ीडबैक आया। मज़ीद सवालात लोग चाह रहे हैं मालूम करना और आपकी रहनुमाई चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने आप कह सकते हैं कि पार्ट 2 हम स्टूडेंट वीज़े का प्रोग्राम कर रहे हैं। जी ज़रूर ज़रूर। तो इस सिलसिले में जो एक सवाल पिछले उसमें भी जिक्र हुआ था इसका कि HEC के हवाले से जी कि जो भी वेरिफिकेशन हो रही है डॉक्यूमेंट्स की जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में आप बताइएगा। हाँ, डिपेंडिंग ऑन मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जब अप्लाई करना फॉर एवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन क्रेडेंशियल्स, यूजुअली यू हैव टू डू इट थ्रू ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, राइट? मेजॉरिटी जो हमारा लोग मोस्टली साउथ एशियंस आई सी दे वुड आई रिसीव वेस्ट रिपोर्ट्स वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस से, राइट? और उसी पे जब आपने अप्लाई करना, स्पेशली इफ यू कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान या एनी अदर कंट्री, आपने देखना स्पेसिफिक कंट्री रिक्वायरमेंट्स। अच्छा। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लिखेंगे, शायद वो कहेंगे आपको HSC पे आपने वहाँ से अपने क्रेडिट अपना ट्रांसक्रिप्ट अपने डायरेक्ट वहाँ भेजना, पर वो आगे वेस्ट को भेजेंगे, राइट? पर ऐसे कोई सिलसिला है अगर ये आप पाकिस्तान से एनी अदर कंट्री से, मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ आप पहले वेबसाइट पे जाओ, खुद आप अपना कंट्री का आप नाम लिखे और देखो अगर स्पेसिफिक कंट्री रिक्वायरमेंट्स एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को है, पर आप वहाँ से आप खुद ही आप दे सकते हैं। राइट। सो लाइक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है हर कंट्री की, कि जो ज़रूरी नहीं है कि जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट हो किसी और कंट्री की भी हो, लेकिन वेरी करती है ये। हाँ जी, डिपेंड करता है कि किस कंट्री से अगर इनको ज़रूरत है, अगर वैसे वो या वो खुद आपसे मांगे वो भी कर सकते हैं, वो आपसे या कहेंगे हम लोग को डायरेक्ट अपना ट्रांसक्रिप्ट स्कैन करके भेजे, राइट? या अगर इनको ओरिजिनल चाहिए, इनको डायरेक्ट HSC से चाहिए, वो इनसे वो आपको कहेंगे आप इनसे रिक्वेस्ट करें और वो हमको एज अ थर्ड पार्टी वो हमको डायरेक्ट भेजेंगे फिर, राइट? फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस, राइट? ठीक। और इसके अलावा ज़ीशान साहब, जो स्टूडेंट वीज़े के हवाले से हमारी जो पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी कि मेडिकल के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, वो तो आप डिस्कस कर चुके हैं और बता चुके हैं। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी नज़र में हो कि यकीनन ये पॉइंट वैलिड है और लोगों को मालूम होना चाहिए, उसके बारे में आप? हाँ, जब बंदा और कोई जैसे लड़का लड़की हो यहाँ आते एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले अपना एक्सपेंसेस वो कैलकुलेट करना चाहिए। अच्छा। आने से पहले वो ऑनलाइन वो पता करें हाउ मच इट्स गोइंग कॉस्ट फॉर अकोमोडेशन, as especially just in a big city like Toronto, shared accommodation is mostly I think the most suitable option for anyone, right? If a girl is coming, she could find an all girls accommodation. अगर कोई लड़का all boys accommodation, right? So अपने खास करने देखना, right? Number 2, I suggest that you focus on your work, right? मुझे पता है यहाँ expenses भी ज़्यादा, इसलिए मैंने suggest कर रहा हूँ जहाँ आप expenses save करें, आप save करो। और number 1, focus on your education. जितनी आप अच्छे करेंगे उतनी आपको results मिलेंगे, and these results will help you lead to a better job. Right. यहाँ competitive environment है, even आपको work पे right, आपको अपना फील्ड में मिलना जब when you're applying for a full-time job in your field after getting a work permit, वो आपको वो शायद एम्प्लॉयर आपसे मांगे आपका ट्रांसक्रिप्ट हमको दे, राइट? ठीक है, यू ग्रेजुएटेड, ठीक है, पर लेकिन वो चाहते हैं, ठीक है, हमारे वो अगर उनके पास 20 लोग हैं सेम प्रोग्राम ग्रेजुएट, वो सबसे जो top results वाले वो इन लोगों को हायर करेंगे, right? Most likely if I was your employee, you wouldn't want to hire the person जो जिन्होंने सबसे बेस्ट numbers लिया, right? Best numbers लिया, इसलिए मैं कहता हूँ you should focus on school, look at where you could cost cutting, right? Look at the legal requirements, right? Let's say contact your school for the make sure you have the medical benefits, right? Which are included, but just more than make sure with your school, because the health regs, the Ministry of Health is regulated by each province separately. Right. So you would have to coordinate with your school to make sure that you have that you'll get the health coverage, right? In case, God forbid, something happens to you. You're entitled to work as well. आपको work permit मिलता है, right? 20 घंटे, but now because as we mentioned in the previous episode, for this year the students are allowed to work unlimited hours, right? But again, as I mentioned, don't work too many hours that will devote you from your studies, right? ज़ीशान साहब, ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स जो आते हैं किसी भी कंट्री से, तो उनको क्या ज़रूरी होता है कि यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी की ही अकोमोडेशन लें या वो अपनी खुद अरेंज कर सकते हैं किसी के साथ? हाँ, अच्छी सवाल है. Thank you very much for asking that. So it's up to the student. Number one, आप ऑन कैंपस ले सकते हैं या ऑफ कैंपस ले सकते हैं, राइट? अच्छा. ऑन कैंपस का ये फ़ायदा हम पहले बताते हैं, नुकसान बाद में. फ़ायदा ये है, you're on the university. Right. You have 24 hours access to library, books. Right. वहाँ study, they have separate study rooms. जहाँ private room जहाँ आप study कर सकते हैं on your own. Right. You have group rooms जहाँ group projects भी कर सकते हैं, right? You don't have to take public transportation, right? Right. अगर आपका 8 बजे सुबह क्लास है, आप 7:30 बजे आप सकते हैं डायरेक्ट आप क्लास जा सकते हैं, right? So I'm saying ये benefits है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान ये है, they're costly, काफ़ी expensive है. अगर आपके पास funds है, फिर आप on campus ले. अगर आपका budget है, फिर maybe off campus. तो इतनी दूर नहीं, but थोड़ा सा university का at least जो accessibility, maybe like 5-10 minutes drive away from campus, right? And that maybe it's easier to come, so that way budget be or university is close to your college or university as well, right. And location wise. Right. ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर आया हुआ है, वो अपनी स्किल्स के हवाले से कोई जॉब अगर करता है या वो शादी कर लेता है यहाँ पे, तो क्या उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा या उसको वापस जाना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना पड़ेगा? अगर इसने वो नंबर 1 वो जॉब शुरू नहीं कर सकता अभी जब तक इसके पास वर्क परमिट नहीं आता, राइट? अगर इसके पास वर्क जैसे स्टडीज के बाद वो जॉब शुरू कर सकता है, बट देन ही इज ऑन अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, दैट्स हिज स्टेटस. वो वर्क परमिट पे है. अगर कोई स्पॉन्सर कर दे वर्क परमिट को, उस सूरत में क्या होगा? वो कब, ड्यूरिंग स्टडीज और आफ्टर स्टडीज? ड्यूरिंग स्टडीज. Depending, like अगर वो if he's already completed a bachelor's from his country from before, right? For example, master's कर रहा है, right? He's doing a master's program, right? And he's already completed the bachelor's. अगर job offer आ गया, जी. So what we could do then, we could also, we wouldn't have to withdraw the application from a student visa, right? We would have to withdraw करना पड़ेगी वो. हाँ जी, we could then, right? And then we would have to apply for the new program, right? And for example, कोई provincial program में इसको job offer, he already has a bachelor's, इसको ज़रूरत नहीं है master's, ने वहाँ के लिए apply किया, right, for permanent residence in that province for under the PMP program in whatever province, right? And he's currently on a student visa, then he would have to change his status, right? अगर इसको job मिल गया, maybe he should apply first. अगर मिल गया, then at the time of then he could withdraw his student application, then accept the what's it called, the permanent resident PMP program, right? So maybe he should apply first, depending whether he gets it or not, based on that information. Then, based on his circumstances, then when he knows he 100% he's got the job offer, then he can withdraw the student and then he can pursue with the PMP. ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि कोई स्टूडेंट है, उसका कोई अपनी स्टडी के हवाले से ही कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले उसी में और वो बड़ा सक्सेसफुल हो जाए, तो उस हाँ, because work permit is restrictions too, right? जब आपको work permit, जब आप किसी, जब the government gives you work permit, they give you a list of restrictions as well, right? They allow you to work for 20 hours a week, or now, as I mentioned, full time. But there's certain trades that you're not allowed to work in, and if you're on a student, you're committed to the school, right? You're committed to study, right? Right. So usually this is more applicable to jobs. तो क्या अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकता है यहाँ पे वो? You could be a director. But you need to you could have registered, anyone could register a company, but you need to have one at least one Canadian director, right? अच्छा. So you could even be a shareholder and you could be a director, at least one so he could do it with someone else, right? Right. अपने company register कर सकता है, right? So maybe he could share the profits too, right? And the thing is that depending on what his role is too, is he hired as an employee? Is he just a shareholder, right? So all these circumstances we have to take into consideration. This is a case-by-case basis, right? So maybe that person wants to contact me directly, and then we could speak a little bit more detail based on the circumstances, based on what they want to do, based on what their wishes are and what type of role they want. Right. अभी रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है कि कोई भी फॉरेनर जो है वो घर नहीं खरीद सकता है कनाडा में, तो क्या ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए भी उनके ऊपर भी अप्लाई होती है? There's some exceptions as well. I know there's exceptions to refugees, people with permanent residence, right? For students, that's a really good question as well, because this law was just passed in January last week. Right. So even this law is new for me as well. Right. So from the knowledge that I already at this point that I know, it's only for 2 years. It's not even permanent. Oh, okay. It's only for 2 years. Right, unless the government extends it, right? And saying that, and there are exceptions, like I mentioned, for refugees, so there may be exception for students, right? For this, I would have to look into a little bit more. If someone wants to purchase a home and they could contact me in my office directly, then I'd be more than happy to help them, right? To see if they want to purchase and see whether or not they're impacted or not by this new regulation, right? Right.
तो इसमें ज़ीशान साहब जैसे रेफ्यूजी होते हैं उनको वर्क परमिट तो मिल जाता है, तो क्या वो स्टूडेंट के लिए भी वो कर सकते हैं कि अगर वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहें या आगे मज़ीद तालीम हासिल करना चाहें तो उसके लिए क्या लॉयर के थ्रू कुछ हो सकता है इसका? इनका वर्क परमिट मिलता है और स्टडीज़ के बाद, राइट? मैंने कहता रेफ्यूजीज़ की बात कर रहा हूँ। और अभी रेफ्यूजी हम बात करें, ठीक है? सो रेफ्यूजीज़ आपको जब आप asylum क्लेम करेंगे यहाँ एज ए रेफ्यूजी claimant, राइट, not an approved refugee. So basically the first day when you submit your application, your status becomes a refugee claimant. राइट, So once you receive your status as a refugee claimant, you're allowed to apply for a work permit based on your, and you're issued a SIN number as well. So that's an open work permit, right? For आपको benefits, you can start working legally anywhere. हाँ, वर्क परमिट तो नॉर्मली मिल जाता है लेकिन कुछ लोगों को मुश्किलात होती हैं स्टडी की परमिट की। As a refugee. As a refugee. But refugee, you get the full benefits. For example, you have the kids. If you have a family of kids who want to go to school, they'll be allowed to study at school. Even the government, I believe, they give you even special subsidies if you want to study. There's many grants and benefits to refugees, right? Achha. So if they could study if they want, right? If a refugee, for example, someone's coming from a displaced country, right, a war-torn country, इनका education नहीं मिला वहाँ, right? And they want to come to Canada and they want to continue their education, right? And if they're a refugee claimant and they want, for example, do a course in nursing or early childhood education, right? Right. For example, or an IT field or whatever media field, right? And they want to pursue that. They have every right to pursue that, and they also get benefits, right? Okay. As a refugee, right? Right. With, so for them, they shouldn't have an issue. Right. And government will support them. Exactly, because as refugees, you'll get even if you don't have financial support, if you can't find work, they'll give you, I think, social assistance. Even for accommodations, they give subsidies, right? Or they qualify for the OSAP or no? OSAP is a really good question for a refugee, right? I knew that they have government benefits, right? So OSAP usually is towards Canadian citizens and permanent residents, but refugees do get a lot of benefits as well, which and they do get with regards to their education, right? Because the government knows that they're coming from displaced countries, right? That they don't have any money, obviously, right? So it only makes sense that the government will help them as well. अच्छा, राइट राइट। ये बताइए ज़ैन साहब कि कोई भी स्टूडेंट जो कि कनाडा से बाहर हो ऑनलाइन कोर्स लेता हो तो क्या उसको इमिग्रेशन के हवाले से कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं? The online courses are not जो online courses जो लोग कोविड के अंदर और exceptions थे। हाँ, लेकिन साल से ज़्यादा को अगर कोई हाँ साल से ज़्यादा वो is considered full time, right? जो कोविड में हो रहा था वो उस टाइम वो कंसिडर भी कर रहे थे कि ठीक है अगर आप ऑनलाइन अपना कंट्री से कर रहे थे ये इस कंसिडर फुल टाइम एजुकेशन उससे पे ये आपको वर्क फ्रॉम भी मिल सकता था कनाडा में, लेकिन अभी जो कोविड का रिस्ट्रिक्शन जो अभी खत्म हो रहे हैं वो कहते नहीं आपने दोबारा इन पर्सन आना है। हाँ जी, यहाँ आकर कनाडा यहीं आपने यूनिवर्सिटी से स्टडी करना है इन पर्सन, फिर आपको बेनिफिट। लेकिन जो कोविड का ड्यूरेशन था उन्हें उस टाइम वो एक्सेप्शन दे रहे थे, पर राइट नाउ इट्स बैक टू जैसे पहले प्रोसीजर था। हाँ जी, आपने यहाँ फिर आना, फिर यहाँ आपने फिर स्टडी करना in person. First के बाद जब completion के बाद you are able to apply for work permit. ओके, राइट राइट। हाँ जी। तो इसमें ख़ास तौर पे अब मैंने देखा है कि मुख्तलिफ दुनिया की कंट्रीज से स्टूडेंट्स काफ़ी तादाद में कनाडा आ रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान से बड़े कम आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसकी क्या वजह है? Because number one, maybe I don't know what the answer is particularly, because I think it's because maybe political situation, yeah, financial situation, yeah, it's because of the higher threshold of assessment. But Pakistan does have a special program called SDS, Student Direct Stream. Oh, okay. But they made special for Pakistan. ये 2-3 साल पहले आए थे। अच्छा अच्छा। ये program, especially Pakistani students के लिए। Right. SDS. Right. One of the first countries in the world because ये issue is not from now. This is nothing new. Pakistan से students का ratio बहुत कम है compared to other countries. जी हाँ। So इसलिए the Canadian government had to issue the new stream called SDS. Right. Student Direct Stream. And उस पे आपको admission चाहिए, आपको financial requirements चाहिए, right? But फिर भी unfortunately even till today, even the ratio is still low, right? So maybe it's best for the government of Pakistan, the Ministry of Foreign Affairs should contact the Ministry of Education in Canada and saying that that they should get more opportunities to हमारे जो पाकिस्तान नौजवान वहाँ जो talented लड़कियाँ जो माशाल्लाह बहुत intellectual, very sophisticated, very माशाल्लाह who are very brilliant and who are brilliant minded, they should get the opportunity to study abroad in Canada as well. Right, to expand their skills and their education level as well, right? So it's clear we should maybe encourage our Pakistani governments to basically negotiate or have discussions with the Canadian education ministry to proceed with more Pakistani applicants. Right.
इसमें एक चीज़ ये बताइएगा ज़ीशान साहब के जो स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान से या कहीं से भी, तो उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की जैसे सेल फोन लेना है उनको या और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट खोलना है उनको, तो वो like it's the same procedure like the other people or they have a different everything they have a student bank account because for example आपको even a credit card आपको credit card में लेकिन student credit card अच्छा with a lower limit okay जो limit वो और secure होता है secure हाँ जी आपको यहाँ इंशाल्लाह ताला जब आप depending on your banking institution जहाँ आप जाएंगे बैंक they open a student bank account for you if you're approved they'll give you a student credit card right obviously right you need some maybe if you don't have cash you maybe you have and that way you can even start building your credit history as well right OC time में right so you do have the benefits students to have all the benefits all benefit इसमें एक जैसे स्टूडेंट है यहाँ पे 2 साल 3 साल रह रहा है वो साइड में जॉब भी कर रहा है जैसे आपने पहले फरमाया था तो वो CRA की रिक्वायरमेंट है कि उनको साल के एंड ऑफ द ईयर they should file the tax they should file tax if they're working and living in Canada. Achha. They should file taxes to show that because whatever income that you earned in Canada, you have to file tax to show that you earned this income, right? Right. So then you'll get the benefits as well, right? Afterwards, right? Because you do the government does take CPP from you. They do take these they do take employment insurance from you too, right? So you should in return file their taxes and they'll give you tax. There's a tax breaks too available on your income, available on your circumstances. You may even get a refund as well, right? Okay. So इसलिए आपको करना चाहिए. You should file your taxes. इसमें जहाँ तक ताल्लुक है जैसे टैक्स वगैरह का, लेकिन क्या ड्राइविंग लाइसेंस के सिलसिले में जैसे कि हम और आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, क्या स्टूडेंट्स के लिए भी सेम प्रोसीजर? हाँ वो ले सकते हैं, right? Depending on या इंटरनेशनल लाइसेंस पे चलाएंगे? ये आपने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे जाना. Maybe if we're in Ontario, right? For example, maybe go to Service Ontario, based on your I think driver license. अगर international driver license Pakistan se driver license right, and they would have to take their license to the ministry the service Ontario वहाँ जाना पर वो आपको बताएंगे क्या requirements are, so they should be able to because because many of my clients are students that are driving right. So right वो अपने गाड़ी भी लेते हैं right. That's the next question probably. Finance भी कर सकते हैं right, ये भी कर सकते हैं right. So that's probably your next question right. So जब लाइसेंस लेंगे तो गाड़ी भी चाहिए. वही ना लोगों के पास पैसे नहीं, so they're even eligible for financing. They yes okay. So they could even right. So based on their income, based on right. So depending on the company right. So this right. So they would have to go to some company that they would have to fulfill the criteria, have minimum payment requirements per month right. But because they're eligible to, then they have to get insurance as well right. So So मगर इंश्योरेंस के हवाले से तो ज़ाहिर है इंश्योरेंस आपकी फील्ड नहीं है मगर मैंडेटरी है राइट. मैंडेटरी लेना और ज़ाहिर है कि स्टूडेंट आया है बाहर से तो फॉर श्योर उसकी इंश्योरेंस तो हाई होगी क्योंकि especially new गाड़ी के साथ young depending I'm not an insurance adjuster right exactly but like I know from experience depending on your age, depending on your status, depending on your family status they give you a quote and they give you monthly premiums right, especially if it's a new car right as well. So based on all these factors right. Exactly. So saying that but up here you're eligible at the end of the day too right to lease and drive a car here. So that's what for students and what I want to mention was that for driving even liability you have to pay for insurance and there's many benefits for students here too right. So and that's what I'm saying a lot of students they do delivery jobs then right to compensate for that. So a lot of them are doing Uber or Uber Eats right. So right. So अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आया हुआ है और उसकी फैमिली स्पाउसल वीज़ा पे आई हुई है इधर और उसके अगर बच्चे की विलादत होती है तो उस सिलसिले में क्या प्रोसीजर होगा कि क्या वो बच्चा यहाँ का सिटीजन होगा या? सबसे पहले मैं आपसे व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ for their information anyone born on Canadian land is considered a Canadian citizen. Okay. Regardless जो भी आपका status है आप स्टूडेंट हो रेफ्यूजी हो आप विजिटर हो right. अगर आपका बेटा या बेटी यहाँ पैदाइश इस ज़मीन पे होता कनाडा की ज़मीन पे anywhere in Canada right. आप ऑटोमेटिक सिटीजन बनते हैं. Okay, like by birth citizen. Once you जहाँ भी आपका birth होता है वहाँ you can apply for the birth certificate, right? वो भी आप ऑनलाइन हो गया सब कुछ right? उस birth certificate साथ आप citizenship के लिए apply कर सकते हैं. Okay. Right? They said they provide the birth certificate. तो बच्चे की पैदाइश होने के बाद क्या उन बच्चे के पेरेंट्स के लिए सहूलत हो जाएगी कि वो इमिग्रेशन प्रोसेस जल्दी हो जाए उनका या सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा उनको? Same procedure. सिर्फ बच्चा right? जब वो बड़ा हो सकता है वो यहाँ रह सकता है right? For example अगर पेरेंट्स का इमिग्रेशन ना हो even comes back to study for example right?
Right. If he wants to come, and he doesn't have to pay all international fees उसने pay नहीं करना. Right. It's mostly regular fees pay करेंगे as a Canadian citizen because he was born in Canada, right? So बच्चे को तमाम वो benefits मिलेंगे जो यहाँ के रहने वालों को मिलते जी, हैं. health benefits, SIN number, right? Regular like fees, right? As you know, same Right. opportunities, right? Where they can माँ बाप ने immigration system से जो भी process उन्हें खुद गुजरना, right? Right. So that even I don't want to get off topic, but someone, for example, I just because you आपने ये question पूछा, अगर they're born in Canada, even if the child is born outside of Canada, and if the parents are Canadian citizens, they can still apply for their children. It's as long as one parent is Canadian. Oh, okay. And that's, ये कहने में ये अच्छी बात है because some countries say both parents have to be Canadian citizens. Right, right. अगर एक parent is a Canadian citizen, they can automatically apply for their children abroad. If they're, for example, a Canadian citizen and your kids are born in Pakistan, so you could apply for you could apply for citizenship, right, for them, right? राइट राइट. अच्छा ये बताइए ज़ियान साहब कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर आया हुआ है, वो एक आध सेमेस्टर के बाद वो फेल हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो उस सिलसिले में क्या प्रोसीजर है, क्या उसको? हाँ अच्छी सवाल है. बेसिकली अगर 2 साल का परमिट पे आया, राइट, 2 year वर्क परमिट, अगर गॉड फॉरबिड इसका एक सेमेस्टर में वो फेल हो गया, but then he would have to repeat that semester, वो courses, right? जो भी वीज़ा तो नहीं अप्लाई करना पड़ेगा? वीज़ा या एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई, अगर वो टाइम का अंदर आ गया ठीक है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आपने टाइम का 2 साल का परमिट है, अगर वो कोर्स फेल हो गया, फिर भी शायद आपने समर में किया, राइट, समर आपने कवर अप किया, राइट? आपने बाकी सुने तो शायद जॉब करते या आपने आपने ठीक है जो फेल कोर्स आपने सेमेस्टर में आपने समर में किया कंप्लीट, पर आपने एक्सटेंशन की जरूरत नहीं. अगर वो सिर्फ कोर्स ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग द सेमेस्टर, रेगुलर सेमेस्टर, फिर शायद आपने वो एक्सटेंशन लेना, फिर स्टूडेंट एक्सटेंशन बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टेंसेस. ओके, तो एक्सटेंशन आप यहीं रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी ऑनलाइन, राइट? But they asked the reason, say ठीक I didn't pass my courses, right? So I want to apply for extension based on my results. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कोई? They shouldn't be, right? देखो मैंने ये सिर्फ basically based on your circumstances, आपने एक कोर्स फेल किया या because it's based on course not semester, right? शायद आपने बाकी courses and semesters, अगर 4 courses per semester है, आपने एक फेल किया and 3 को पास किया, right? So it shouldn't be an issue, right? अगर आपने पूरी 4 फेल किया और फिर गवर्नमेंट से this guy ये बंदा अपना स्टडी सीरीज नहीं ले रहा है, right? हर बंदा इंसान है, हर बंदे से फेलियर होता है या कोई एक कोर्स बहुत मुश्किल है बाकी आसान है, राइट? जी. हर बंदे का different learning pattern है, different learning techniques है, right? So maybe one course may be a little bit difficult, right? But you shouldn't have an issue. But if you're consistently failing, right? Pre-immigration offer review करेंगे देखो इसने सब fail. That means he's not trying. वो अपना कोशिश नहीं कर रहा, right? या वो काम कर रहा है, वो अपने स्टडीज पे फोकस नहीं है. Right. ज़ियान साहब जैसे व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे एड्स आ रहे होते हैं कि हम आपका स्टूडेंट वीज़ा या इमिग्रेशन कराएंगे, तो ये कैसे मालूम हो सकता है कि लाइक वो लाइसेंस याफ्ता है या नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है? इसका कोई पोर्टल या कोई इस तरह की चीज़ है जिससे वो वेरीफाई कर सकें? जी एज अ लॉयर anyone who's registered in Canada is registered with the Provincial Law Society. अभी हम Ontario में हैं. As a Canadian lawyer, I'm registered with Law Society of Ontario. Right. आप मेरा नाम लिख सकते हैं या मैं Zeesean Raza Sheikh lawyer Law Society directory में, right? Law Society of Ontario का directory है, वहाँ आप देख सकते हैं Zeesean Raza Sheikh, वो आप देख सकते हैं मेरा credentials आना, मेरा license number आना, my office address, right? सब कुछ वहाँ मेरा इंश्योरेंस है, वो कहते हैं इंश्योरेंस लाइबिलिटीज़ का है, राइट? सब कुछ वहाँ मेरे स्टैट्स है. इवन फॉर इमिग्रेशन IRCC एक वेबसाइट है, वहाँ वो जा सकते हैं, वो देख सकते हैं. इफ इज इमिग्रेशन रेगुलेटरी कंसल्टेंट, वो इनके पास भी लाइसेंस है, राइट? वो सब कुछ लाइसेंस नंबर, क्रेडेंशियल. जो बाकी लोग हैं अगर वो कह रहे वो दैट मींस दे आर अनलाइसेंस्ड, और सम पीपल नॉट इवन इन कैनाडा, कोई पाकिस्तान में बात वो कहता है वो वहाँ से भी करेंगे, इसमें तो इनके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना कोई लाइसेंस है, ना कैनेडियन गवर्नमेंट, बिकॉज कोई there's no enforcement of of fraud, right? Because right वो तो पाकिस्तान में बात है या कोई कैनेडा में unlicensed, there's no enforcement, right? Unless you want to maybe a criminal legal proceeding, but they can regulating proceedings, कुछ नहीं, like disciplinary action, right? कुछ भी नहीं हो सकता if you're unlicensed. That's why it's always better to go to licensed professionals, someone जो आपको पता है आपके साथ fraud नहीं करेंगे, जो आपको जो license है, जो accountability और liability भी है, right? इनके पास, so it's better to always go to a licensed individual. Right. इसमें जैसे साहब ये बताइएगा कि जैसे इमिग्रेशन के लिए या स्टूडेंट वीज़े के लिए किसी लिए भी लॉयर हायर करते हैं, तो आप अपनी तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं लॉयर को या जो भी जिसके थ्रू आप कर रहे हैं काम,
तो जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो अगर लॉयर या जो भी जिसके थ्रू आप कर रहे हैं एजेंसी के थ्रू, वो कहें जी हमारी आपसे 5,000 तय होता है, लेकिन अब क्योंकि प्रोसेस लंबा हो गया, ये हो गया, तो आप हमें 5 के बजाय 7,000 दें, तो वो डिस्प्यूट हो जाता है, उसके लिए कोई? सबसे पहले जब क्लाइंट एंगेज करता है लॉयर के साथ, एज पर लॉ सोसाइटी रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोफेशनल रूल्स, हमने एक एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट हमने करना, राइट? इट्स कॉल्ड द रिटेनर एग्रीमेंट, राइट? उसमें हमने तय करना, राइट? सबसे पहले रिटेनर एग्रीमेंट ये लिखा है, ये काम आपका काम है, ये टाइम ड्यूरेशन ये है, ये इतने हम पैसे लेंगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा फीस है, ये फीस हमारे ट्रस्ट अकाउंट में जाना, राइट? And these are other clauses, right? So these are future clauses that we mentioned in the contract too. Right. Like, and for example, I'll give you how the sentence begins: in the event, right? In the event of, right? So and so, per we will charge this much, or we are not responsible for refund. अगर हमारा कंट्रोल से बाहर है, राइट? अगर गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया, आप हमसे हम आपको रिफंड नहीं कर सकते, बिकॉज हमने कोशिश की आपका वीज़ा लगे बट नहीं लगा, ये कंडीशनल बेस पे नहीं है, राइट? वीज़ा लगे या फिर हम पैसे रिफंड करेंगे या पैसे लेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर वो किसी ने और पैसे मांगे, has to be in writing. अच्छा। And you have to sign for it. अगर client, to protect the client, client has to agree and sign. जो written agreement होता है, they have to sign. And अगर if the lawyer wants more money, अगर lawyer consult या और पैसे चाहते हैं, right? पर additional retainer agreement sign करना। Right. ज़ेन साहब ये बताइएगा, आखिर में एक सवाल और आपसे मैं करूँगा कि स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे आए हुए होते हैं, तो क्या वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं? या फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल इशू चल रहा है, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है या रिलीजियस चल रहा है कोई, तो उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करें तो कोई उसमें इफेक्ट पड़ेगा या कोई हर्ज है उसमें? इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, या लोकल पॉलिटिक्स में? बिकॉज यहाँ everyone still is guaranteed constitutional rights. Right. The Canadian Charter of Freedom and Rights is guaranteed to everyone on Canadian land. Right. Regardless of status. अब ये जो Canadian constitutional rights जो है कनाडा में, just regardless of your status, you're still guaranteed these rights, right? Okay. अगर आप protest कर, can't be a legal organization, right? Has to be, right? Like illegal activity, so it has to be sanctioned protest, right? Okay. Through permits, right? Permits, yeah. Right, you have to do. It has to be a civil and obedient. It can't be, it can't be any physical altercations, right? Because if you get a criminal record, then that might jeopardize your student visa, right? So you don't want to. So you still have the right to protest, right? For example, आपका tuition fee एकदम ऊपर आ गया, right? It's your right to protest as a student, right? Or to go to the Canadian government and go outside the legislature and say, look, we're international students, already ज़िंदगी यहाँ मुश्किल है, already inflation, premium Canadians के लिए यहाँ मुश्किल है, पर students के लिए और मुश्किल है, right? Exactly. So you have the right to protest. ये आपका constitutional right है, you're protected. Okay. But it has to be civil and obedient and permitted, right? And has to be licensed, right? Right. Thank you so much ज़ेन साहब। मुझे उम्मीद है कि नाजरीन के सवालात काफ़ी हद तक जो पॉइंट्स उनके वैलिड थे वो कवर किए होंगे, लेकिन एक ज़ाहिर है क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है कि मुश्किल है कि 1-2 सिटिंग में पूरा हो जाए। लेकिन नाजरीन, जैसा कि आप लोग हैदर टीवी के स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर देख रहे हैं, इस पे आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं ज़ीशान रज़ा साहब से। और कोई भी सवाल हो इमिग्रेशन के हवाले से, स्टूडेंट वीज़े के हवाले से, आप बेशक ईमेल करें या कॉल करें और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और आज के प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरद नवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़र्रुख अब्बास को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।